हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो मु आज नर्सिंग रो विभिन्न प्रकार असेसमेंट रो स्केल जो तरी के आमे पेशेंट रो केमिति कोन द्वारा स्केल ले जानि परबा पेशेंट रो कोन पेन डायग्नोसिस विषय रे आमे जानि परबा ता विषय रे विभिन्न प्रकार स्केल अछि। तो सेही स्केल को मु आज डिस्कस करबा को जाउची। तो ता भितरे मो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु। There is a common scale used for the assessment for the treatment. First which is GCS which is Glasgow Coma Scale. It is a most common scoring system used for the describe the level of the consciousness in a person following a traumatic brain injury. That the score range is started from 3 to 15 and the first description was in 1975 by Zenet and Bonard. Glasgow Coma Scale द्वारा आमे हमर कोमा स्टेटस विषय जानि परिबा माने पेशेंट रो कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस विषय जानि परिबा जोतरे के हमर स्कोर रहिछि 3 and the level of the consciousness is high at the up to 15. Then Asia impairment scale. The Asia Spinal Injury Association as a universal classification tool for the spinal cord base to stabilized sensory and motor assessment. आमे sensory और motor assessment पाई American Spinal Injury Association तरफरु Asia impairment scale टा use करा जाए. Behavioral pain scale can be used to assess in adult including those in the condition of in the ICU रे behavioral pain केमिति हमर pain रहिछि हमर इट कैन बी यूज्ड इन इंटुबेटेड पेशेंट एंड नॉन इंटुबेटेड पेशेंट माने इंटुबेटेड पेशेंट पाई भी हम यूज करबा नॉन इंटुबेटेड पेशेंट पाई भी हम ए प्रोसीजर टा यूज करबा. CPOT, the pain assessment of the tool CPOT in four dominant is facial expression, patient facial expression, body रो movement, complications with ventilator भितर भी complication और voice used for the non intubated patient और muscle tension. The total score can be vary करे 0 to 8 where 0 is indicated no pain behavior and 8 is indicated to clear sign of the pain behavior. Then Braden scale is predicting pressure ulcer risks. It is a tool that was developed in 1987 by Braden and Nancy Breckstrom. एटारे आमे प्रेडिक्ट करिबा प्रेशर सोर रो अल्सर रो रिस्क केते अछि आमे ब्राडन स्केल द्वारा प्रेडिक्ट करिबा. नॉर्टन स्केल ता डेवलप हितला 1960 रे जोटे कि वाइडली यूज्ड इज असेस टू रिस्क फॉर द प्रेशर अल्सर इन एडल्ट पेशेंट. केते मात्रा रे रिस्क अछि प्रेशर अल्सर रो केते रिस्क अछि एतरे आमे केते प्रेडिक्ट करूचंती कि ब्राडन स्केल ले आमे केते प्रेडिक्ट करूचंती कि प्रेशर अल्सर अछि बोली किंतु नॉर्टन स्केल ले आमे केते अछि रिस्क ता विषय में असेस करिबा. वाटर लो स्केल होची इट प्रोवाइड प्रेडिक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑफ द प्रेशर सोर केते मात्रा रे हमर प्रेशर सोर रो डेवलपिंग होची सेटा वाटर लो स्केल हमें जानि परिबा. VIP स्केल विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस एटा को जो तरह स्केल टा जोटे के माने असिस्ट करिवो जोते के प्रमोट ऑफ द रिमूवल ऑफ द पेरिफेरल इंट्रावेनस कैनुलास माने केते मात्रा रे फ्लेबाइटिस हेछि इंट्राकात देबा द्वारा हमर फ्लेबाइटिस केते मात्रा रे हेछि ताको असेस करे. CPIS क्लिनिकल पल्मोनरी इन्फेक्शन स्कोर जोटा कि स्क्रीनिंग टूल जोटा कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड पर्सन पाई वेंटिलेटर एसोसिएशन पर्सन पाई केते मात्रा रे पल्मोनरी इन्फेक्शन अछि सेतरे जाना पड़िबो. BOAS बेक ओरल असेसमेंट स्केल and the mucosal plug score were used to assess to the oral cavity पाई assessment पाई बेक ओरल असेसमेंट स्केल टा यूज करा जाय. Rozier recognition of stroke in emergency room scale for the stroke recognition tool पाई एटा यूज करा जाय. NIHSS the National Institute of Health Stroke Scale एटा होची टूल टा यूज करा जाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू बी ऑब्जेक्टिवली
क्वांटिफाई द इम्पेयरमेंट ऑफ द कॉजेस ऑफ द स्ट्रोक माने एटा हेल्थ केयर प्रोवाइडर माने कोन पई हमर स्ट्रोकटा हेउची को केसेस रे होउची ताकू इन्वेस्टिगेशन करबा पई यूज करा जाय FLACC फेस लेग एक्टिविटी क्राई कंसोलेबिलिटी स्केल एटा होची मेजर करे जोटा कि यूज करे हमर असेसमेंट पई पेन ऑफ द चिल्ड्रेन जोटा कि एज ऑफ द 2 मंथ रु 7 मंथ आमे तो तांकर पेन असेसमेंट सेटा तांकर कांदीबा एक्टिविटी रु आउ तांकर केते कोन कंप्लेन करूचंदी केमिति फेस रखुचंदी सेइतरु ही आमे असेस करि परिबा कैरिज स्केल होची इज न्यूनेटल पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट C for crying R for requiring increased oxygen administration I for increased vital sign E for expression S for sleepiness 4 score full outline of all responsiveness 4 score is clinically guiding of the scale designed to use to medical profession in the assessment of the patient with impaired of the level of the consciousness GCS pupil score जो कि हमर कैलकुलेट करबा सबट्रैक्टिंग ऑफ द pupil reactivity हमर लाइट रे pupil टा केमिति कोन रहूची एटा GCS रो हमें pupil reactivity द्वारा हमें जानि परिबा CDR होची क्लिनिकल डिमेंशिया रेटिंग जोटा कि हमर न्यूमेरिक स्केल ले क्वालिफाई ऑफ द सर्विस ऑफ द डिमेंशिया को एटा फोकस करे रास होची राइकमोंड एगिग्नेशन एंड सेडेशन स्केल जोटा कि वैलिडेशन एंड रिलेबल ऑफ द मेथड टू असिस्ट टू द पेशेंट ऑफ द लेवल ऑफ द सेडेशन एंड इंटेंसिव केयर यूनिट